देख रहे हैं 80 मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज का शो बेहद खास है इसीलिए क्योंकि हम आपको निवेश के नुस्खे और इसकी बारीकियों से रूबरू तो कराएंगे ही, लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारे साथ आज कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो आपको निवेश के गुर सिखाएंगे। चौंकिए मत, चिल्ड्रंस डे का हमारा ये स्पेशल एपिसोड है जहां पर बच्चे निवेश और कारोबार की ABCD हमारे साथ साझा करेंगे। तो चलिए शो में आगे क्या क्या है देखते हैं एक बार ऑन द शो में। आज आपको मिलवाएंगे उन बच्चों से जो बड़ों को पीछे छोड़ दे, बच्चे जो कामयाब हैं, हुनरमंद हैं, बच्चे जो हमें और आपको सिखाएंगे निवेश और बिजनेस के गुर। कैसा रहा 2022 निवेशकों के लिए? SIP ने तो एक साल में दिया नहीं कोई रिटर्न, लेकिन 2023 में क्या बरसेगा मुनाफा? पोर्टफोलियो में 10 फंड है लेकिन मुनाफा नहीं, कैसे बढ़ाएं या घटाएं निवेश पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं निवेश, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ, तो अपने सवाल आप 80 मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को 9619873567 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टार्टअप बेस्ड रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया ने पॉपुलैरिटी की कई ऊंचाइयां छू ली हैं। अब इस शो में कई ऐसे बिजनेसमैन आए जिन्होंने अपने आइडियाज से न सिर्फ लोगों को बल्कि शार्क्स का भी दिल जीता है, बल्कि अच्छा खासा फंड भी रेज किया है। लेकिन इस शो के आखिरी हिस्सों में जाकर सबसे ज्यादा सुर्खियां 13 साल की अनुष्का जॉली ने बटोरी हैं और अपने बिजनेस आइडिया से शार्क्स का दिल भी उन्होंने जीता और साथ ही 50 लाख रुपए का फंड भी जुटा लिया है। चलिए अनुष्का से आपको मिलवाते हैं और उनके आइडिया और उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। अनुष्का, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। और शार्क टैंक और उसके सफर की तो बात होगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि ये जो आइडिया है आपका ऐप बनाने का, ये आपको कैसे आया? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पे इनवाइट किया। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड टॉक टू यू अबाउट माय वर्क। सो मैं बुलिंग पे 4 साल से काम कर रही हूँ और मैंने एक्चुअली शुरू किया था जब मैं 9 साल की थी। और मैंने बहुत लोगों से बात की है, विक्टिम से बात की है और पुलिस से बात की है और पेरेंट्स और काउंसलर्स और स्कूल्स। तो इतना सारा ग्राउंड वर्क करके और इतने सारे एक्सपीरियंसेस को सुन के आई थिंक आई हैव कम टू अ कंक्लूजन, एंड दैट कंक्लूजन इज दैट bullying cannot be resolved until unless it's reported. तो bullying reporting बहुत ही ज़रूरी है और अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है अवेलेबल जिससे कोई बुलिंग रिपोर्ट कर सकता है और स्कूल ये रिपोर्टेड इंसिडेंट्स को देख सकते हैं। तो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड एटमॉस्फेयर है और स्कूल्स भी they want to take action but they don't exactly know how. तो स्कूल्स को डायरेक्शन देने के लिए और पेरेंट्स और विक्टिम्स को हेल्प देने के लिए मैंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है कवच, और ये एक बुलिंग रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप है जिससे पेरेंट्स और विक्टिम्स बुलिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं और स्कूल्स ये रिपोर्टेड इंसिडेंट्स को देख के एक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं कि कवच के जरिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम तो उठाया है बुलिंग के खिलाफ, लेकिन क्या इससे पहले, ऐप बनाने से पहले, आपने अपनी आसपास में होने वाली घटनाओं के चलते आपको प्रेरणा मिली इस ऐप को बनाने के लिए, या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जो शायद अगर आप कंफर्टेबल हो तो शेयर करना चाहें? यस, तो मैं खुद बुली हुई थी जब मैं 8 साल की थी, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। और these bullies were supposed to be my closest friends, my best friends.
ओह! और उन्होंने मुझे ह्यूमिलिएट किया और उन्होंने मुझे बहुत नीचा दिखाया 1 साल के लिए और एंड आई रिमेंबर आई वाज़ सो अपसेट आई हैड सो मेनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आफ्टर हुँ, हुँ। गेटिंग सीरियसली बुलीड और ये मेरा मज़ाक उड़ाते थे, मेरी डार्क स्किन का मज़ाक उड़ाते थे और जैसे मैं थी और बिकॉज़ आई वाज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन maybe and they used to pick on that and they used to make me feel bad for being different तो हुँ। मुझे प्लेट रखवाते थे अपने शू लेसेस बनवाते थे मेरा मजाक उड़ाते थे all of that and it was a very traumatizing experience for me but ultimately मैं उससे बाहर निकल पाई I was able to talk to somebody about it who helped me get out of it हुँ, हुँ। and ultimately I decided that I don't want anybody else going through what I did so I created um, the cover app. तो अनुष्का, आप 13-14 साल की चाइल्ड एंटरप्रेन्योर हैं। मुझे बताएं कि आप टेक्निकली क्या इतनी साउंड थी कि आपने खुद एक ऐप बनाया, या आपने किसी की सहायता ली, या आपने पहले ये सीखा और उसके बाद ऐप बनाया? तो ये ऐप मेरी टीम ने मुझे हेल्प किया बनाने में, प्रॉपर्ली डेवलप करने में। हुँ। बट दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम क्रिएटिंग एन ऐप, सो आई डेफिनिटली डिड गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोज़र एंड गॉट टू नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि कितना मुश्किल काम होता है ऐप को बनाना। और हुँ। डेफिनिटली हमने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, बट क्योंकि मेरे पास टीम थी, मेरे मेंटर्स थे, तो वी वर एबल टू अल्टीमेटली लॉन्च द ऐप। टॉक अबाउट शार्क टैंक, हाउ डिड दिस हैपन? तो एक्चुअली शार्क टैंक मैं सुबह संडे मॉर्निंग में बस न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और मैंने एक ऐड देखा था शार्क टैंक इंडिया कंटेस्टेंट्स के लिए और मैंने सोचा कि मैं अप्लाई करूं। Initially, I was very hesitant because obviously because of my age, I did not think that they would actually take me seriously. पर फिर मैंने सोचा कि मैं अप्लाई करती हूँ क्योंकि what's the worst thing that happens that I get rejected और मुझे रिजेक्शन से डर नहीं लगता। तो मैंने ट्राई किया और मैंने फॉर्म भरा। आई थिंक 2 ऑनलाइन फॉर्म्स थे और फिर एक इन पर्सन राउंड था एट इन दिल्ली बिफोर वी वर कॉल्ड टू द फाइनल शूट इन मुंबई। सो मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए टू माय सरप्राइज एंड देन आई प्रेजेंटेड माय आइडिया ऑफ माय ऐप to the sharks at Shark Tank. And Shark Tank was obviously, I would say it's one of the best experiences of my entire life, of my entire short 14 years. But it was really, really, I'm really grateful that I was able to get that opportunity to gain that exposure कि आप टीवी सेट पे एक रियलिटी शो शूट कर रहे हो, कैसे 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 फील होता है। और आई गॉट टू मीट सो मेनी इंटरेस्टिंग पीपल, so many interesting entrepreneurs and just to interact with uh, this people who have the same amount of passion बिल्कुल as सही। you. So it was a great experience. तो फिर फंडिंग किस तरह से आपको मिली? फिर आगे का रास्ता कैसे निकाला आपने, और अभी क्या स्टेटस है? तो मुझे अपने ऐप के लिए 50 लाख वैल्यूएशन पे फंडिंग मिली टू शार्क से और उसका मैंने इस्तेमाल किया टू क्रिएट द ऐप, टू लॉन्च द ऐप। और अभी I am right now I'm going to different schools. I'm trying to implement the app. I'm taking sessions, spreading Okay. awareness about bullying. But I'm also working on mental health for teenagers as a whole. So I want to kind of expand और मैं मेंटल हेल्थ को होलिस्टिकली फोकस करना चाहती हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा इशू है। आई थिंक we don't know, but actually 10% of adolescents are need severe mental health help. So that's around 160 million adolescents in the world. But I think all of the other adolescents that are there, or the total 1 billion adolescents, we all need some sort of mental health support. Just to tie through the anguish of being an adolescent. तो हमारा एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है, पीयर प्रेशर होता है, बॉडी शेमिंग होती है और रेसिज्म और डिस्ट्रेस, और ये सारी सारी चीज़ें हर एडोलेसेंट इससे गुजरता है और उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है कि हम कैसे डील करें इन इश्यूज़ के साथ। तो आई वांट टू क्रिएट अ रैम्प or a support that would help adolescents sort of get into adulthood so they can
not face certain issues or learn how to deal with facing certain issues. So yeah, I want to expand coverage and I want to focus on this holistically. And I'm doing this actually using a lot of immersive technology, metaverse. Yeah, I'm focusing on that and I'm creating a mental health metaverse for teenagers. चलिए, The तो first- आप चाइल्ड एंटरप्रेन्योर तो हैं ही, आप कवच के ज़रिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, पढ़ाई के लिए समय कैसे निकाल पाती हैं? तो I think it all comes down to time management, क्योंकि लर्निंग कि हर रोज अपना टाइम मैं कैसे बेटर मैनेज कर सकती हूँ. और उसके अलावा आई हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑब्वियसली फ्रॉम माय टीम एंड माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी आउट if it's because of schoolwork or because of my schedule. So but I'm definitely learning, and I believe that time management के जरिए you can do literally a million things a day, and you can get the best out of your day. You just need to manage your time well. अनुष्का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारी अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है. बोलना पड़ेगा कि काफ़ी इंस्पिरेशनल है आपकी जर्नी और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार कामयाबी के नए आयाम छूती रहें. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. Thank you so much. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर हमने लगभग 14 साल की अनुष्का से बात की, जो कि एक चाइल्ड एंटरप्रेन्योर है, लेकिन अब आपको एक यूट्यूबर से मिलाते हैं. आप सोच रहे होंगे यूट्यूबर तो लगातार हमारे शो पर आते ही रहते हैं, लेकिन ये जो यूट्यूबर है ये बहुत ख़ास है क्योंकि ये 7 साल का है और निवेश और उससे जुड़ी हर पहलू पर अपने यूट्यूब चैनल पर और पूरे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विस्तार से बात करता है. मैं बात कर रही हूँ क्रिश बालाजी की. और क्रिश, हाय, आर यू कनेक्टेड? आप हो मेरे साथ? हाय. Hi. So when I spoke to you earlier and you told me you're having gobi ka paratha, I told everyone in office that you're having gobi ka paratha with ketchup. And everyone was like, oh my God, that's a lovely combination. Did you have your dinner finally? Yes, I did. You did? Okay. What are you wearing? What? Sorry? Come I again? do not regret it. Acha. What t-shirt are you wearing? What's written? This is a t-shirt actually. Ah. Oh, I love the color actually. I love the color. Tell me something. So, which is your favorite subject in school? My favorite subject in school is maths. Is maths, which is why you like talking about finance. Technically. Okay, you have a lot of videos. मैं आपका YouTube देख रही थी, उसमें आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं क्रिश, और आप अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पर बात करते हो. तो आज ना मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आप टीचर हो, ठीक है. आपने अपने वीडियोस में फिक्स डिपॉजिट्स की बात की है, आपने इमरजेंसी फंड्स की बात की है और डेट की बात की है. सो आज आप मुझे क्या सिखाने वाले हो? I'll be talking mostly about saving and investing and you know a lot of critical financial aspects. Wow, that sounds easy and complicated. So tell me, how we'll start with what? Savings today. Yeah, sure. Okay. So savings is basically very important. So once you get into your first job, you need to start saving at least 50% of your amount. Okay. So take your saving every single day, and that every single day when you're saving, after 10 years, the amount of money you would have. Say you're taking you're saving 500 rupees every day for 10 years. That would be a humongous amount. Right. So you can start saving at a young age. Once we grow maybe 10 years older, 5 years older, 6 years older, you don't know how much of an impact that can put on us. Right. Can be a positive impact. So, and as emergency fund is very important. So saving early can also help you with your emergency fund. Right. Yeah. Right. So tell me something now. Where do you read up all these things, and how do you make your videos? I mean, do you first decide a topic, and then you like it, you understand it, and then you shoot a video? Is that how it goes? Kind of. So basically, it's a short process. My dad helps me with finding out the content, and he helps
with shooting the videos, editing them. So basically what he does is he finds out content and he gives me some ideas that I can mention in the video, and he has a rough discussion or a discussion with me on that topic. So I can understand if I have any mistakes, I can speak to him. If it's right or wrong, I can just confirm that. Then after that, we just have to shoot the video, and we shoot small like 50-second parts or maybe 20-second parts. So we do that, and then after that, in the end, we have to edit the video, and then we just upload it. And you don't get conscious of anything? I mean, do you put makeup before you shoot your video? Do you touch up your hair and all that stuff? No, I just wear some nice short. No, I'm looking at few videos that are going on the screen. I think this hairstyle which you have currently now is suiting you better. Okay, so your next video you keep the same hairstyle. Promise? Yes, I will. I try to maintain it. So how do you remove time to study then? You do so much of content on YouTube and you've put so many videos. When do you study? Actually, I don't study that much. Okay. Okay, very honest confession. Okay, is your dad listening to you this? Is your mom listening to this? I don't know. He's sitting in another room. I'm not sure. Okay, and they are okay with you not studying much. But you managed to score well, hai na? No, I study when the time comes. Ah, see, you're a smart kid, hai na? So now what do you want to do? Like, okay, you know the basics of financial planning, okay? ऐसा मैं समझ रही हूँ. तो अब आगे क्या करना है? Like, you want to become a great investor? What do you want to become? When I grow up, I really recently during the summer vacations before I got into FIIS, I had gone to Ahmedabad, and that was my first time going on a plane after I think 3 years. Okay, yeah. So then I found a very thrilling experience of going on a plane. So now currently I've started, researching a lot about planes. I play flight simulator games. So I really want to be a pilot when I grow up. But investing is still handy. Oh, that's lovely. Which is the current video you're working on? Video, we haven't worked on a video in very time, but I am kind of active on Twitter right now. You're active on Twitter? So, Yes. so what kind of, so tell me something on your social media platforms when you make all these videos, what is the kind of comment that you get? Like people ask you to teach them financial concepts. You read the comments part, do you go through that? Yeah, sometimes I do. Basically, I just, I get a lot of praising comments, and I'm really thankful about that. So, they, a lot of my dad, he promotes it on his social media. Now, earlier when I used to shoot a lot of videos, like I was very consistent, I didn't have my social media account. So now I have it. So next time when I make a video, I'll start promoting it myself as well. So tell me one thing, I'm sure you must be getting some pocket money from your parents, right? How much is that? I'm not getting it. You're not getting it yet? No. I don't even get money. You don't want to ask them for pocket money? No. No? Not even after this show? Nah. No. Such a good kid you are. I don't need pocket money. I have my laptop to play video games, that's enough. Acha. So what advice would you give to the kids of your age who maybe just watch your video but can't make the content like you do? They might not have the understanding that you have. They might not have parents who help their kids understand all these things also. So what will you tell those kids? How should they understand all these concepts that you teach them? So it's just all so basically if anybody wants to become a content creator, the first info I would give is before starting to require help from any other person, you should start a solo channel. Even I have my own solo channel with around 82 subscribers. So I post my gaming videos on that. I post my free time videos. So I manage that channel completely, and on this channel my dad helps me. So owning my own channel, as in I'm not saying that channel isn't mine, but I think as in managing a channel, it has really helped me in the long run of hosting this channel. So yeah.
That's interesting. Thank you so much, Krish, for being a part of this show and talking to us and helping me and my viewers. Thank you so much. And next time we are having that catch-up thing together. Promise, okay? Sure. All right, bye. Bye. चलिए, तो चिल्ड्रंस डे के मौके पर ये हमने आपको 2 हुनरमंद बच्चों से रूबरू कराया और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज की तारीख में हर उम्र के शख्स के लिए अपने आप में एक प्रेरणा है। लेकिन